All right, let's get started. So आज का हमारा टॉपिक है नेगेटिविटी रिमूव करना, हमारा तमस, हमारे माइंड का. जैसे हम ईयर अपना एंड कर रहे हैं, we'll reflect what all things went wrong in our life in the last year, this year 2021. A lot of families underwent a lot of mishappenings, you can say. Okay, but as we say, everything happens as according to the laws of karma. We have to accept it and move on, right? But why mind always likes to think what happened bad? Mostly bad, because mind is like a flowing river which flows always down. हमेशा माइंड नीचे की तरफ जाता है, हमेशा नेगेटिव सोचना चाहता है या विक्टिम बनना चाहता है, पास्ट में रहना चाहता है, बिकॉज माइंड की वो टेंडेंसी होती है. Mind doesn't want to stay in the present moment because it takes a lot of effort to stay in the present moment. It's easier to run back in the past or worry about the future. Okay? So, but mind के ऊपर क्या है? Mind के ऊपर बुद्धि है, हमारा इंटेलेक्ट है. Mind is like a clerk, buddhi is like the boss. Boss will decide where the mind has to go. Okay? And you are above everything. You're even the boss of your buddhi. So whenever your mind runs to the past thinking about a negative thing, you bring it back to your present. And the best way to bring it back to present is to have something called an object of meditation. संस्कृत में उसका टर्म है आलंबना. आलंबना मतलब होता है, means something to hang on to, because mind cannot live without hanging on to anything. Okay, mind needs a support all the time. वो अपने आप खड़ा नहीं हो सकता. So we always try to, in meditation, we have an object of meditation. It can be a breath, it can be a mantra. And as I have told you before, that mantra meditation is the strongest form of meditation because of the nature of the meditation. You always have to focus on the sound. तो आज का हमारा महा मृत्युंजय का मंत्र है, और वो एक स्पेसिफिक तरीके से हम चैंट करेंगे. We'll chant it 21 times. And also the asanas that we are doing today, it will be very special. It will be very slow. Again, focusing on the mantra and holding the asana for 1 or 2 rounds of mantra. मैं ज़्यादा बोलूँगी नहीं आसन के समय. We'll just play a music of mantra and we'll focus on that mantra while we do the asanas. Now, एक precaution है. If you're feeling dizzy या lightheadedness, stop the mantra and start normal breathing. Because what happens when we intake a long breath and we chant the mantra, mantra में prolonged out breath होता है. मतलब जो सांस हम छोड़ते हैं ना, काफी लंबा होता है. It's very good for our central nervous system because वो instantly उसको relax करता है. Okay? लेकिन people having some blood pressure issues might feel a bit dizziness because prolonged exhalation होता है. Not every time, sometimes only. तो उस केस में आप normal breathing करिएगा. Even while postures, if you're holding the postures for 1 or 2 rounds of mantra, if you're not able to hold, it's your free will. Whatever you want to hold, you can hold it. Okay? Yoga mein you have a choice. You can do anything according to what your body is requiring. Okay? ठीक है? With that in mind, हम कोई भी आसन में बैठ जाएंगे. वज्रासन, सुखासन, पद्मासन, smile asan. Everybody smile, chin mudra. And then place your hand on your lap on either side. And close your eyes gently. And focus on your breath. We'll just first observe our posture before we start the mantra chanting. So observe the position of your legs. आपके पैर comfortable होने चाहिए. Clothes अगर tight हैं तो adjust कर लीजिए. आपकी seat comfortable होने चाहिए. Make sure you are sitting equally on both sides. किसी एक साइड पे ज़्यादा झुके आप नहीं हो. कमर सीधी होनी चाहिए. Spine बिल्कुल straight, comfortably straight. Chin parallel to the floor. आपकी जीभ आपके ऊपरी तालू से लगी होनी चाहिए, बिल्कुल हल्की सी, behind the upper set of teeth. That is the normal resting position of the tongue. Feel all the tension melting away from your face. ऐसा अनुभव करिए, face की muscles पूरी relax हो रही हैं. Feel all the tension melting away from your shoulders, hands, legs, and feet. Inhale and exhale deep.
अपने अंदर जाने वाली हवा और बाहर आने वाली हवा पे ध्यान दीजिए. In breath is slightly cooler, bringing all the fresh prana from outside. Feel that in breath, feel that freshness and the coolness of the air entering your nostrils. उस ठंडी हवा का अनुभव करिए. जो आउट ब्रेथ है वो स्लाइटली वार्म होती है, रिमूविंग ऑल द टॉक्सिन्स एंड नेगेटिव एनर्जी फ्रॉम आवर बॉडी. बाहर आने वाली हवा थोड़ी हल्की गर्म होती है. इनहेल एंड एक्सहेल. सबसे पहले हम इस भाव के साथ ध्यान में बैठेंगे, अपने आप को धन्यवाद करते हुए आज यहाँ प्रेजेंट रहने के लिए. It requires lot of energy to come here again and again. तो उस बात का हम अपने ऊपर ही आभार व्यक्त करेंगे. We acknowledge that life is very busy, but still we can find time for self-care. Because self-care is the priority. हमसे ही दुनिया चलती है, तो हम अच्छे रहेंगे तो सब कुछ अच्छा चलेगा. इसलिए अपने ऊपर टाइम निकालना बहुत ही जरूरी है. In fact, this is the first duty we all have, to spend some time with our body and our mind, because it's an investment जिसका 10-fold return आता है. You see yourself 6 months from now, give yourself a big goal and you'll achieve it. मैं mantra chanting शुरू करूंगी and we'll chant it for 21 rounds, and it's a specific way we are chanting, so you just listen for the first round and you can repeat it after. और अगर मंत्र में ना 4 लाइन्स हैं. ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्युर्मोक्षयमामृता. अगर आप मंत्र चैंटिंग नहीं करना चाहते हैं, या सपोज यू गेट टायर्ड व्हाइल चैंटिंग द मंत्र, व्हाट यू कैन डू इज with the 4 lines you can do in breath, out breath, in breath, out breath. Okay, slow and steady. और आपको अभ्यास है कुंभक का. कुंभक मतलब सांस रोकना after in breath and out breath. So you can do in breath कुंभक, out breath कुंभक. You can follow either pattern depending on your abhyas, your practice. Okay, so first listen. Om त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षयमामृतात्. So the end word is really prolonged and you focus on your stomach because you will breathe out completely while saying the last word. Okay, let's begin. Om त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षयमामृतात्. ॐ 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 त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्
मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। जन्मो ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। 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 Last one. ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। Stay in silence, focus back on your breath. And feel the vibrations of the mantra getting absorbed in your body and your mind. मन आपका बिल्कुल शांत हो गया है। हम अनुलोम विलोम प्राणायाम स्टार्ट करेंगे अभी। तो मैं मंत्र जाप करूंगी एंड विल डू सम राउंड्स ऑफ अनुलोम विलोम। तो आप एक एक लाइन के साथ ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट, ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट या फिर कुंभक ऐड कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स बिगिन। राइट हैंड थंब क्लोजिंग द राइट नॉस्ट्रल इन थ्रू द लेफ्ट। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्
मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् Last round. ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्. You can finish off your cycle. Keep your eyes closed. Focus back on your breath. Feel your whole body vibrating with the mantra. जब माइंड हमारा प्रेजेंट पे फोकस रहता है तो सारा स्ट्रेस अपने आप चला जाता है. All negativity vanishes and we enjoy the bliss. That's why it's called present. It's a gift from God, the present moment. We'll just do one kriya, which is called Khechri Mudra. For those who don't know Khechri Mudra, you can look at me. For those who know, you have to roll the tongue up so that the tip of the tongue is touching the upper palate like this. Okay, ऊपर की तालू से जीभ का टिप टच करता होगा. And then close your mouth and close your eyes. You just have to focus on the vibrations that the tongue is making with the upper palate. ये बहुत ही powerful mudra है to concentrate, to bring your focus to the present moment. Okay? And just focus on that vibration that the tongue is making, the tip of the tongue is making with the upper palate. And normal breathing. कुछ भी सोचना नहीं है. टंग के मूवमेंट को फील करते रहिए. मैं 2 राउंड मंत्र का चैंट करूंगी. तब तक आप होल्ड कर सकते हैं तो होल्ड करिए. अगर आपकी जीभ दुख जाए या अनकंफर्टेबल लग रहा है, you can roll your tongue off and focus on normal breathing or roll back it up again if you're comfortable. ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्. You can roll your tongue off. Just sit in silence for next 30 seconds.